Pakistan-occupied Kashmir protests are intensifying, where Pak Prime Minister is clearly flustered. He has now buckled under pressure, and the steps he's taken after buckling under pressure as protests intensify across Pakistan-occupied Kashmir, where people are demanding basic rights. Shehbaz Sharif has now expanded the negotiation committee. He's added further members. He's asked the committee to proceed immediately to Muzaffarabad to negotiate with these people as protests are escalating. And literally for basic human rights, that is what the people there are deprived of. And that is the least that they ask for. This as they heighten these protests, and how 3 cops also lost their lives in these protests that turned rather violent. Shehbaz Sharif is now worried about the situation, and in order to take things under control, the steps that he's come up with is to ask the negotiation committee to head to Muzaffarabad immediately. In fact, they've also expanded the negotiation committee. And this has become a huge concern for Islamabad to how to contain these protests. The Shehbaz Sharif government is now not just monitoring the situation on the ground very closely to how the protesters are reacting, but they're focused now on how to contain the damage. There you see how people are agitated, they are angry, riots that are going on in full swing, and the situation that has only been escalating over the past many days. Hundreds of people who've been injured in these violent protests. In fact, 3 cops who also had to face the brunt. And most importantly, how this rousing sentiment is creating a lot of tension, because people say that they are being deprived of basic human rights. And if the government does not take concrete steps, then the violence will only escalate. The committee has been formed. In fact, now that the Shehbaz Sharif government has taken steps to expand this committee, and they are feeling the pressure, given the fact that tension is mounting in POK. Moving on to the massive protests that have erupted across Pak-occupied Kashmir, and shocking scenes that emerged from POK's Muzaffarabad, where Pakistani forces are not just cracking down, they are also butchering their own Kashmiri civilians. The people of POK are demanding their basic rights of jobs, electricity, dignity, but what they're getting are bullets. POK is witnessing a massive civilian uprising against the oppressive policies of the Shehbaz Sharif government. The mass movement that is led by the Awami Action Committee, crowds are demonstrating across Muzaffarabad, Dheerkot, Dadiyal and other areas. But the Pakistani army has brutally responded. At least 12 protesters who've been killed, shot dead, and over 200 who've been injured with many bullet wounds. मैं सारे लोगों से ये गुजारिश करूंगा, जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है, कि वो जो है पूरी कुव्वत के साथ, पूरे जोश जज्बे के साथ एक तो कल बाहर निकलें, मसाजिद में ऐलानात करवाएं, कोई मर्द घरों में ना रहे, छोटे बच्चों को छोड़ के बाकी जो बालग मर्द हैं वो घरों के अंदर ना रहें, बाहर निकलें, बाहर निकल के इस्लाम मार्च का हिस्सा बने। आपने शटर नहीं खोलना, लॉकडाउन नहीं खोलना, दर्जनों शहादतें हो चुकी हैं और सैकड़ों लोग जख्मी हैं, तो इसलिए इस इस्तिकाल को कामयाब बनाने के लिए इस जुल्म और जबर के खिलाफ जो है पूरी कुव्वत के साथ बाहर निकलिए और इस गुलामी की गलाजत से बाहर निकलिए और एक नई सुबह के लिए अपनी शहादतों की आरज़ू लेके बाहर निकलिए। और जहां पर जो भाई पिछले 3 दिनों से कत्लेआम किया जा रहा है, लोगों को हरासा किया जा रहा है, लोगों को शहीद किया जा रहा है, लोगों को कत्लेआम किया जा रहा है, तो कल पूरी कुव्वत के साथ बाहर निकलिएगा। और जो पीछे बैकअप में लोग हैं उनसे गुजारिश है कि वो पहरेदार की सूरत में बाहर निकलिएगा। ये डायन बन चुकी है, डायन अपने बच्चों को खाती है। ये रियासत जो है इस वक्त अपने बच्चों को, अवाम को मारने पे तुली हुई है, लिहाजा ये मारेगी भी और उसकी आवाज कहीं बाहर न जाए, इसलिए उन्होंने मीडिया भी बंद कर। अगला प्लान क्या है? अगला प्लान ये इंडिया को कहते हैं ना जालिम जाबर है, और वहाँ तो काफर है, हिंदू है, वो तो जुल्म करेगा।
इनसे क्यों पूछो भाई तुम क्या हो? तुम मुसलमान होते हुए इस जिसको तुम 100 कार्ड आजाद कश्मीर कहते हो, ये आजाद नहीं है। ये तुमने इसको पाबंद करके रखा हुआ है, लोगों की तमाम आवाजों को बंद करके रखा है, और तुम डोंगर चाह रहे हो जनाब, ये खित्ता हमने आजाद करके रखा है। Earlier, Defence Minister Rajnath Singh issued a strong message on Pak-occupied Kashmir, where he said that POK will return on its own. No need for aggression, just the voice of the people. Let's listen it. पीओके अपने आप आएगा, चिंता क्यों करते हैं? पीओके में अब डिमांड होने लगी। आपने सुना होगा एक दो बार कुछ लोगों ने नारेबाजी की थी। 5 साल पहले एक बार इंडियन आर्मी को कश्मीर वैली में मैं संबोधित कर रहा था एक कार्यक्रम को। उस समय ही मैंने कहा था कि पीओके को आक्रमण करके हड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो हमारा पड़ोसी है ही, वो हमारा है ही पीओके। और पीओके के लोग स्वयं ये कहेंगे कि मैं भी भारत हूं, और वह दिन आने वाला है।